Hi friends, welcome back on the RCA channel. In today's video, we are going to discuss the second part of the NBFC. If you watch this part first time or this video first time, I recommend you please watch our first video of the NBFC that was earlier uploaded by the RCA channel. In that video, various aspects of the NBFC are already covered. Some of them are notification issued by the ICMA for the applicability of the Indian years. Next, we also discuss the various part of the NBFCs are also discussed in first part of the NBFC video. Next, difference between the NBFC and bank are also covered in that part. And lastly, definition and classification of the NBFC are briefly covered in that part. So I recommend you please watch that video if you watch this video first time. And guys देखिए क्या होगा अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपका जो पार्ट है जो आपने मिस किया था वो पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो पार्ट है ये पार्ट उसी के ऊपर डिपेंडेंट है और आपको ये पार्ट इजीली समझ में आ जाएगा अगर आप फर्स्ट पार्ट देख लेते हो तो। सो गाइज नाउ लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट ऑफ द एनबीएफसी बट बिफोर proceeding this part guys, I request all of you please download the notes of the NBFC part 2 from the link given into description box. So guys, you can get the clear picture of the NBFC in your mind. आरबीआई मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एनबीएफसी को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आरबीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करने के लिए एनबीएफसी के। सो फ्रेंड्स, आरबीआई इश्यू द सम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एनओएफ। एनओएफ मीन्स नेट ओन फंड। So guys, now we discuss the what is NOF means net own fund. It means the own fund and it consists the paid up equity capital, free reserve, balance in share premium account, capital reserve representing the surplus arising out of sales proceeding of the fixed assets, and lastly but it does not include reserve created out of the revaluation of asset. So guys, if any reserve are created out of the revaluation of the asset, then such reserve shall not be considered as a net own fund. So net own fund also reduced by the accumulated loss, book value of the intangible asset, investment in the shares of other NBFCs, and debenture of the subsidiaries and group companies. And guys, last 2 point, that is investment in shares of the NBFC and investment in the shares of other NBFC, and second is debenture of the subsidiaries and group companies are excluded if and only if it is excess of the 10% of the own fund. So guys, if investment in the share of the other NBFCs and debenture of the subsidiaries and group companies are in excess of the 10% of the own fund, then in such case we deduct or we require to deduct such amount from the net own fund. Now guys, there are some regulation on the accepting and renewing the public deposit. NBFC should have some rating as specified by the RBI. So guys, जब NBFC को कोई फंड एक्सेप्ट करना होता हो या उसको रिन्यू करना है तो उस केस में उसको क्या करना पड़ता है, कुछ रेटिंग्स लेनी पड़ती है। और वो रेटिंग कौन देता है, वो रेटिंग देती है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई जो है रेगुलेटरी बॉडी है किसके लिए, एनबीएफसी के लिए। एज पर रिवाइज गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई, unrated AFC means asset finance company had to get the rating by the 31st March 2016 means 31st March 2016 तक ये जो NBFC है, जो अनरेटेड NBFC है, उनको क्या करना पड़ेगा, रेटिंग लेनी पड़ेगी। किसके पास से रेटिंग लेनी पड़ेगी, आरबीआई के पास से। और वो जो प्रोसेस है, वो सब प्रोसेस जो है, गाइडलाइन जो है, वो आरबीआई ने इशू कर रखे हैं। वो अपने सिलेबस में नहीं है बट वो प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। अगर NBFC रेटिंग नहीं लेती है तो वो फंड एक्सेप्ट भी नहीं कर सकेगी और रिन्यू भी नहीं कर सकेगी, मतलब उसको रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। सो इफ एनी एनबीएफसी विच आर नॉट टेक द रेटिंग फ्रॉम द आरबीआई एज इन प्रिस्क्राइब मैनर, देन इन सच केस रिस्पेक्टिव एनबीएफसी आर नॉट एबल टू accept the fund or renew the fund. So this is the big disadvantage of the unrated NBFCs. Now guys, there are some limit to accepting the fund, and that limit is reduced by the 4 time of net own fund to the 1.5 time of the net own fund. So currently NBFC are only eligible to collect the fund maximum up to 1.5 times of the net own
fund. This is the restriction issued by the RBI to all NBFC. So guys, if you want or if any person want to formulate the NBFC, in such case there are some minimum requirement of the NOF net own fund are issued by the RBI, and such minimum fund requirement are all NBFCs mandatorily required to attain the minimum net own fund of the 2 crore rupees by end of March 17. So if any company are already in existence before the March 17 must attain the about 2 crore लिमिट. अगर आपको कोई एनबीएफसी फॉर्मुलेट करनी है तो उस केस में आपको मिनिमम नेट ओन फंड कितना लगेगा, 2 करोड़ रुपीज़ का फंड लगेगा. और आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग है और वो डेट जो है रिस्पेक्टिव डेट वो क्या है, मार्च मीन्स 31 मार्च 2017 से पहले अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस है या प्री एग्जिस्टेंस है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 करोड़ लिमिट है वो क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी. अगर आपने ऐसा नहीं किया उस केस में जो एनबीएफसी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके पास से आपको सर्टिफिकेशन लाना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेशन में मेंशन होगा कि जो कंप्लायंस है आरबीआई के इशू किए हुए वो हम आने वाले 2 साल के अंदर पूरे कंप्लायंस कर लेंगे, पूरे फुलफिल कर लेंगे. इफ दिस 2 करोड़ लिमिट आर नॉट attained by the any NBFC, in such case statutory auditor of such NBFC are required to issue a certificate of the compliance of the 2 crore rupees minimum NOF in the case of the respective NBFC. So this certification are required by RBI from the auditor of the NBFC. If such NBFC are not attain such limit, in that case the RBI are initiate the process of the cancellation of the certificate of the registration. अगर NBFC ने 2 करोड़ की लिमिट अगर अटेंड नहीं की तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई उस केस में इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ कैंसलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. सो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज unrated NBFCs and NBFC with sub-investment grade are required to renew the existing deposit on maturity but not allowed to accept the fresh deposit till they obtain the investment grade rating. So this is the very important point. If any company, if any NBFC, if any unrated NBFC or NBFC with the sub investment grade are required to renew the existing deposit on maturity but they are not allowed to accept the fresh deposit till they obtain the investment grade रेटिंग. अगर कोई एनबीएफसी जो रेटिंग है आरबीआई की इशू की हुई रेटिंग की गाइडलाइन वो रेटिंग नहीं लेती है तो उस केस में वो एनबीएफसी क्या करेगी, मतलब जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है उसके पास वो डिपॉजिट वो रिन्यू कर सकती है बट नया डिपॉजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती. ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रूडेंशियल नॉर्म for the NBFC. RBI issues some direction with respect to income recognition, asset classification, provisioning requirement applicable to NBFC, exposure norms, disclosure in balance sheet, requirement of the capital adequacy, restriction on the investment in land and building and unquoted शेयर्स. देखिए फ्रेंड्स, ये जो आरबीआई है उसने क्या किया है, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ रेगुलेशंस दिए हैं और वो रेगुलेशन किसके बारे में है, जो इनकम रिकग्निशन होती है, उसके बाद जो एसेट क्लासिफिकेशन हम करते हैं जो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे आगे, उसके बाद डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट है, रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी है, मतलब जो एनओएफ का जो रिक्वायरमेंट है वो, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड बिल्डिंग, इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी है और वो गाइडलाइंस ऑल एनबीएफसीज को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. सो गाइस, देयर आर सम एक्स्ट्रा प्रोविजन दैट शुड बी एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज. दैट एक्सटेंडेड प्रोविजंस आर एज बिलो. NBFC which accept the public fund are required to follow the additional prudential regulation, and next is NBFC which has customer interface are required to confirm the additional conduct of the business regulation. So guys, NBFC को क्या करना पड़ेगा, जो NBFC पब्लिक फंड रिसीव करती है उसको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा. और उसी के साथ अगर वो NBFC या अदर कोई एनबीएफसी है वो पब्लिक फंड लेती नहीं है बट वो कस्टमर इंटरफेस करती है, इंटरफेस रखती है, तो उस केस में क्या होगा, उसको कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा. और कोई एनबीएफसी है वो दोनों भी, मतलब पब्लिक फंड भी एक्सेप्ट करती है और कस्टमर इंटरफेस भी रखती है, तो उस केस में उस कंपनी को
दोनों की दोनों जो है, मतलब जो एडिशनल रिक्वायरमेंट अंडर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स और प्रूडेंशियल रेगुलेशन है और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस रेगुलेशन है, ये दोनों की दोनों फॉलो करने पड़ेंगे. सो गाइज, नाउ there is one question in your mind, and that question is what is the difference between पब्लिक फंड एंड पब्लिक डिपॉजिट. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है. तो गाइज, दिस डायग्राम क्लियरली शोन दैट पब्लिक फंड include the public deposit, which means public deposit is a part of the public fund. So guys, I hope your confusion are clear. So guys, in addition to public deposit, there are some other instruments, and that instruments are commercial papers, intercorporate deposit, bank finance, and debenture. And one thing also note here guys, if any debenture and that are mandatorily convertible within the period of the 5 years, in such case, such debenture shall not be considered as a part of the public फंड. सो गाइज, कोई डिबेंचर्स एनबीएफसी ने इश्यू किए हैं और वो डिबेंचर आने वाले 5 ईयर्स में इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो वो सो गाइज वो जो डिबेंचर्स है वो पब्लिक फंड का पार्ट नहीं रहेगा, वो पब्लिक फंड में से हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे. सो गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ द एनबीएफसी. एंड गाइज, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रूडेंशियल नॉर्म, द एनबीएफसीज आर कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग two parts, and that part is based on the asset size of such NBFCs. So guys, we discussed that part. If asset size is more than 500 crore, in such case, so guys, if asset size is less than 500 crore, in such case, NBFCs are exempted from the requirement of the maintaining CRAR, means capital to risk weighted asset ratio. Next is exemption from the complying of the credit concentration norms, and next is maintain the leverage ratio of the 7 to like asset growth with the capital. So guys, in this case there are 2 exemption and 1 requirement are issued by the RBI, and all these requirement are must fulfill by such NBFC. So guys, next case is when asset size is more than 500 crore. In this case, NBFCs are required to follow the tier 1 capital issued by the RBI, and this tier 1 capital is a primary funding source of the bank like equity shares. This is the primary fund of the NBFCs. सो गाइज, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जो टियर 1 कैपिटल है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा. सो टियर 1 कैपिटल आर इंक्लूड इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग. सो दिस इज द 2 मेन कंटेंट ऑफ द टियर 1 कैपिटल. एंड एनबीएफसी एनडी विच हैज एसेट साइज ऑफ द 500 करोड़ एंड अबव शैल मेंटेन द मिनिमम टियर 1 कैपिटल ऑफ द 10%. मतलब जो एनओएफ है उसका अपने को 10% जो है वो इक्विटी शेयर चाहिए. ठीक है, तो टियर 1 कैपिटल के अंडर क्या चाहिए अपने को, 10% ऑफ द एनओएफ. मतलब अब मेरा अगर एनओएफ 2 करोड़ का रहा तो उस केस में 10% मतलब कितना, 20 लाख रुपीज़ मेरा क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स होना चाहिए और रिटेन अर्निंग होनी चाहिए. So guys, now we are going to discuss the asset classification for the NBFCs, and these asset classification are equally applicable to NBFC ND, means non-deposit taking NBFCs, and NBFCs ND SI. So guys, as per the RBI guidelines, the asset are classified in the 4 categories as standard asset, substandard asset, doubtful asset and loss asset. So guys, standard asset means the asset in such case no default in the repayment of the principal or interest and does not disclose any problem to carry more than normal risk attached to business, to that business. So guys, स्टैंडर्ड एसेट मतलब ऐसे एसेट्स होते हैं जिसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं होती है, मतलब जिसके रिगार्डिंग जो रिकवरी का जो इश्यू होता है एनबीएफसीज के आके, तो वो रिकवरी में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता है. स्टैंडर्ड एसेट मीन्स द एसेट that does not contain the any risk of the repayment of the principal and interest. Means if any loan are issued by the NBFC to any business entity and such business entity are regularly pay their principal and interest amount, then in such case that respective loan and advances issued to such entity are considered as a standard asset. Next is substandard asset. Substandard asset means asset which classified as a NPA more than 12 month. सो गाइज, इफ़ एनी एसेट मतलब जो भी कोई एसेट होती है वो एसेट अगर हम 12 मंथ से ज़्यादा अगर उसको एनपीए अगर कंसिडर करते हैं तो वो किधर चले जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट में चले जाएगा. नेक्स्ट, एसेट वेयर द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल हैव बीन रीनेगोशिएट, रीशेड्यूल
or restructure after the commencement of the operation until the expiry of the 1 year of the satisfactory performance. So guys, if any entity made default in the payment of the principal or interest due to critical situation of the business, in such case such entity approaches to the NBFC regarding to the extension or renegotiate or reschedule or restructure of the loan or agreement between the such NBFCs and such business entity. So guys, in this case, until the expiry of the 1 year, such entity are considered as a substandard asset. So guys, next is doubtful asset, and doubtful asset means any term loan, lease asset, hire purchase asset or any other asset remaining substandard for a period of the exceeding 12 months. So guys, substandard asset means the asset that NPA more than 12 months, and doubtful asset means the asset that substandard more than 12 months. So in this case we can alternatively say that if any asset which classified as a NPA more than 24 months shall be considered as a doubtful asset. And last is loss asset. So its loss asset means the asset that is identified by the NBFCs or internal or external auditor और RBI during the inspection of the NBFC. So NBFC का inspection करते टाइम अगर NBFC खुद के बिहाफ पर ये डिक्लेयर कर सकती है कि ये लॉस असेट है, या इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और लास्टली उसको कौन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आरबीआई के ऑफिसर्स है या खुद आरबीआई उसको लॉस असेट डिक्लेयर कर सकती है. और लास्टली इसमें है एन एसेट विच इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द पोटेंशियल थ्रेट ऑफ द नॉन रिकवरी ड्यू टू आइदर destruction in the value of the security, non-availability of the security, and due to any fraudulent act, and last is omission on the part of the borrower. So अगर कोई सिक्योरिटी दी है कोई बिजनेस एंटिटी ने कोई एनबीएफसी के पास, और वो सिक्योरिटी बाद में वो बिजनेस एंटिटी ने सेल कर दी है, तो उस केस में क्या होगा कि सिक्योरिटी ही अवेलेबिलिटी नहीं है किसके पास, एनबीएफसी के पास, तो वो लॉस से ट्रीट किया जाएगा. और दूसरी बात जो है कि अगर कोई लोन की रिकवरी नहीं हो रही है ड्यू टू destruction in the value of the security, in that case such loan or advances are considered as a loss asset. Sometime when any business entity take loan from the NBFCs, and in after taking loan such business entity are fraudulently sell the security against which such loan are issued by the NBFC, and after NBFC realize that such security will be null or such value of the such security will be zero, then in such case such loan or advances which is given by NBFC to such business entity, in such case such loan and advances are treated as a loss asset. So guys, this is our second last point, and that point is non-performing asset for the NBFC ND and NBFC ND SI. So guys, following assets are called as a NPA. So guys, if an asset in respect of which interest, that is interest on loan and advances, remain overdue for the period of the 3 months as on 31st March 2018 or thereafter, and next category is principal amount of the term loan and interest thereon. So guys, if any entity are not paid the principal amount of the term loan or interest thereon for more than 3 months, in such case such principal amount of the term loan and interest amount are considered as a non-performing asset. Next is demand loan or call loan. If any demand loan or call loan are issued by the NBFC to any business entity, and such business entity will not pay the such loan amount to the NBFCs for more than 3 months from the date of the demand or call, in such case such loan and advances are treated as a non-performing asset. Next is bill. Bill means bill of exchange. Remain overdue for the period of 3 months. In such case, such bill is considered as non-performing asset. Next part is interest with respect to short-term loan and advances, and in this case also 3-month limit are applicable if any interest on short-term loan and advances are remain overdue for the period of 3 months or more than 3 months. In such case, such interest on short-term loan or advances are treated as, so in such case such short-term loan and advances and interest thereon shall be considered as a non-performing asset. So guys, next part is any dues on account of the sale of the asset or services render or reimbursement of the expenses incur
and that expenses or that dues are remain overdue for the period of the 3 month. And last part is lease rental and hire purchase installment. In this case, period of the 3 month are replaced by the period of 12 month. So guys, except lease rental and hire purchase installment, the period is 3 month, and for the lease rental and hire purchase the period is 12 month. This is the main difference. Now guys, we are going to discuss the harmonization of the asset classification, and under this we are going to discuss the hierarchy of the asset classification. That hierarchy are include the three parts, and first part is non-performing asset, second part is substandard asset, and third part is doubtful asset. So non-performing asset means the lease rental or hire purchase asset or asset other than the lease rental or hire purchase asset. It shall be become NPA if overdue for the 3 month for the financial year ending 31st March 2018 and thereafter. So guys, in module there are so many years are given like 2016, 2017, 2018. So we are required to only remember the 31st March 2018 limit, and for this purpose I consider here the only 31st March 2018 limit. I recommend you please refer this limit for the exam point of view. So guys, next is substandard asset. So guys, substandard asset means the asset that are classified as a NPA for the period not exceeding than 12 months. And last is doubtful asset. It means the asset that has remained substandard for the period of the exceeding 12 months for the financial year ending 31st March 2018. So guys, this is our second part of the NBFC. I hope you are getting the concept of the NBFC. And guys, please hit the like button and please share this video with your friend, and also hit the subscribe button so you never miss any notification from the RCA channel. And guys, please share this video with your friends so that they can also get benefit from this. So guys, thank you for the watching video, and please download the notes for your reference that is given into description box. So guys, thank you for the watching video.